اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, you know we are reading Social and Political Life book 3rd. It is book 3rd of Social Science, of your subject Social Science, and in this book we are reading 10th chapter, that means law and the name of the chapter is Law and Social Justice. In this law and social justice, so far we have read about the workers working in different capacities, that means in industries, in different firms, in different units, and the domestic workers as well. The workers working in these different areas or different fields, first of all, we should at least give them, our government should take care of these things, that they should be at least given minimum wages. They should also be protected when they are working in any factory, in any industry. They should be protected as well. So laws are made, but law is not enough. Government has to ensure that these laws are implemented, and this means that the law must be enforced. So the enforcement agencies, that means enforcement becomes even more important when the law seeks to protect the weak from the strong. For instance, to ensure that every worker gets fair wages, the government has to regularly inspect work sites and punish those who violate the law. When workers are poor or powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. Employers know this well and use their power to pay workers less than the fair wages. In such case, it is crucial that laws are enforced. پیارے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم سوشل سائنس میں سوشل اینڈ پولیٹیکل لائف بک پڑھ رہے ہیں. یہ بک 3rd ہے سوشل سائنس کی، اور اس بک 3rd میں ہم جو یونٹ پڑھ رہے ہیں، جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں، یہ چیپٹر 8 ہے، لا اینڈ سوشل جسٹس. وہ ہم ریگولرلی پڑھ رہے ہیں، وہ ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے 1-2 دنوں سے. اور اس لا اینڈ سوشل جسٹس میں جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے، جو ورکرز کام کر رہے ہیں، جو مزدور کام کر رہے ہیں انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں، گھروں میں، اور بھی کہیں جگہ ہیں جہاں وہ کام کر رہے ہیں. فرسٹ آف آل، گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے، لا اس لیے بنایا گیا ہے کہ انہیں کم از کم منیمم ویج ملنی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جہاں وہ کام کریں انہیں ان کی پروٹیکشن ضروری ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ سیف ہیں، دیٹ دے آر بینگ پروٹیکٹیڈ. اس کے علاوہ ان کو وہی کام دینا چاہیے جس کے لیے انہیں لگایا گیا، یعنی ان کو ہم یہ نہیں دیں گے ایک کام کے لیے لایا ہے اور دوسرے کام میں پھنسایا ہے، وہ نہیں کرنا چاہیے. لاز جو ہیں، لا بنانا ہی ضروری، یعنی لا بنانا ہی کافی نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے. یعنی جو قانون بنایا گیا ہے اس کو
इम्प्लीमेंट भी करना है, और वो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। यानी लॉ मेकिंग एजेंसीज को ये करना है कि लॉज मस्ट बी इन्फोर्स्ड। इन्फोर्समेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, यानी हमने क्या करना है, हमने वो देखना है कि वीक सेक्शन जो है उसको प्रोटेक्ट करना है उस सेक्शन से जो स्ट्रांग है, जो मजबूत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं। हर एक वर्कर को कम से कम फेयर वेजेस मिलने चाहिए। गवर्नमेंट को रेगुलरली चेक करना है ये चीज़, और उन लोगों को जो लोग ये लॉ वायलेट कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट देनी है। वर्कर्स जो होते हैं ये गरीब होते हैं, उनके पास कोई पावर नहीं होता है, ये अपना रोजी रोटी कमाने के लिए लो वेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं। कहीं कहीं जब उन पर जुल्म होता है तो ये लो वेजेस भी एक्सेप्ट करते हैं, जो कि उनके साथ जुल्म है। और जुल्म करने वाला कौन होता है, वो भी वही होता है जो उन्हें काम पे लगाता है। जो उन्हें काम पे लगाते हैं उन्हें ये पता होता है कि वो उन्हें कम पैसा देते हैं, लेकिन उनके पास पावर होता है, उनके पास मनी होती है। जहाँ ये लोग जाते हैं या जिस एजेंसी के पास ये जाते हैं, पुलिस हो या कोई और एजेंसी हो, वहाँ उनके हक में फैसला नहीं होता है। इस केस में यानी ऐसे जब मामले हो, ऐसे केसेस में लॉज जो है ये किसी भी सूरत में इन्फोर्स्ड होने चाहिए। इट इज़ क्रूशल दैट द लॉज आर इन्फोर्स्ड। तो उन्हें हमें इन्फोर्स करना है, तब ही हमें पता चलेगा कि उनके साथ कहाँ कहाँ ज़्यादती होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले पीरियड में हम इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे।